The first strategy that we have to talk about is building readiness. अगर हमारे बच्चे रेडी नहीं हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर वो टॉयलेट जाने में या बाथरूम जाने में रेडी नहीं हैं अभी, तो हमें क्या करना है? Then that means that we have to start taking them with clothes without doing anything to the washroom for count of 10 seconds and then bring them back outside. अभी भी हमारा कोई बैठने टॉयलेट सीट के ऊपर बैठना, उसके ऊपर परफॉर्म करना, उधर बैठकर पी करना, वो सब गोल नहीं है. टारगेट है they can go to the washroom, wait for 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds in the washroom, look around and come back, come outside. Then also that is the first step. Second, they can sit, and if you count to 20, they are sitting on the toilet seat with the seat down. In the sense, आपने lid जो है टॉयलेट का वो भी बंद किया हुआ है. The lid is closed. They don't feel that they are hanging in the air, and they can sit with their feet down on touching the ground. अगर उनका feet ground को touch नहीं कर रहा है तो हमने एक stool लगाया है और वो lid down के साथ भी टॉयलेट सीट के ऊपर as a chair वो comfortably बैठ रहे हैं. So that starts their comfort zone, or that builds their comfort zone for the place. So that is something that you need to start and make sure that your child is comfortable. अगर बच्चा ये सब steps नहीं कर पा रहा है, then pushing them for peeing and pooping is not the right way. We need to step back. We need to take one step at a time on weekly basis. वीक में एक वीक के अंदर एक टारगेट लेंगे. फर्स्ट मे बी गोइंग टू द वॉशरूम, लुकिंग एट द टॉयलेट सीट. सेकेंड स्टेप विल बी जस्ट सिटिंग ऑन इट. थर्ड स्टेप विल बी जस्ट टेकिंग ऑफ योर पैंट एंड सिटिंग ऑन इट. ठीक है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम स्टेप्स जो हैं वो स्लोली एंड स्टेडी ले रहे हैं. द टारगेट इज स्टिल नॉट मेकिंग देम पी और poop in the pot. They just need to go, be comfortable with the idea of sitting down, tolerating the toilet seat, tolerating the temperature change, tolerating the clothes change. That now the pants are down, I'm still sitting on the toilet seat with the cover on. उसका cover अभी भी नहीं हटाया है हमने, but we're just sitting there. If these steps are not in place, toileting will not become successful. So therefore, we have to make sure that these 3 or 4 steps are taken care of before we start actual training for the toilet.